because Sankal bhai, this question is for you. Yeah. So many people go for, status seeking job after graduation, and you chose to work for Teach for India. So how did that play out for you? I think again, I feel that there's a point in everyone's life, 10 years, 15 years down the line, when you look back and you see that whether you're successful or not, or whether you have achieved what you had planned or not, right? And when a point comes in my life, even if I have not achieved the things which I wanted to, when I look back at these 2 years that I worked with Teach for India, I will feel really proud about myself. There are certain decisions in life that you should take, depending on the fact that what makes you happy and what you believe in, rather than just taking the normal route. So, and I think for any person joining a non-profit organization like Teach for India, the two things which are very much necessary. First is that you should have social sensitivity. The second I feel is that you should have something in you to invest time and bring about a change in the society. And I think I figured those out, and I use credit goes to the opportunities given to me by MPSTME. And that was the time I realized, and taking some motivation again from the alumni, of who were already a part for Teach for India. And that is when I told my parents that I wanted to do this. And and that is when I started exploring more about Teach for India. So for record, I taught 40 underprivileged kids for a period of 2 years in a government school in Malad. And but as they say about, I have got this question 100 times during my Teach for India: sir, आप engineer हो, फिर इधर क्या कर रहे हो? And it's a very valid question. I answered that question for myself, because when I was in the final year, when I had applied, even after applying for the Teach for India, this thing, I asked myself that, am I taking too big of a risk? 4 years of technical knowledge and then jumping directly onto 2 years of fellowship. And to get the final tick, I think I still remember I was going down the stairs on the 4th floor, and that is when Nikhil Gala sir called me, and he told me that, Sankalp kya karna hai? And because he keeps a track on individual students, so उन्होंने पूछा क्या करना है? So that is the first time I told him, sir, I am thinking of Teach for India, and he told me reason batao. And then I gave him certain reasons. Again, taking a lot from social impact. I think social sensitivity, social impact committee से भी बहुत ज़्यादा आई थी, and एक interest होना बहुत ज़रूरी होता है. And that is when he told me, come the next day, we'll plan out. Month after that, I had the job offer in my hand. And if I talk a little bit more about Teach for India, I think the biggest learning that I got from Teach for India is that I and an individual and a society have to evolve together. I cannot just think about myself and ignore the society. So, and I believe that every person in some or the other way should contribute, because this is where you have to live, and this is something which the society will give you everything. So I think that was the reason, my Teach for India, and I have often said that, I have learned more from the students than they have from me. So, and that's the beauty of it. And I'm very fortunate, and I'm very, very happy of that I've taken this, that I took a decision which I really believed in. So yeah, just taking the road less traveled. Yeah. My volunteering experience started when I enrolled for Serval Smiles, which is done by Social Impact. Right. And in my first year, I did it, and just leaving an impact and just one visit, which brings a smile on their face, made me do it in my second year as well. And then Definitely, in my third year, completely agree. You know what? That's what my point is. That you decide how much you want to do, but definitely do. Right. Just take out time for, and that doesn't matter how much time you can, but just take out time to have some sort to give some sort of a positive impact towards the society. Yeah, definitely. And we'll move on to our rapid fire round, or I'll put it as alumni spills for a segment. Decided to switch it up a little, and हमने सार्थक भाई से संकल भाई के लिए questions मांगे, and संकल भाई से सार्थक भाई के लिए questions मांगे. So that's what we did. Yeah. So, Okay. so who wants to go first? We'll start with संकल भाई. Okay. Okay, fine. एक स्टोरी पता चली कि HOD से संकल भाई ने ली थी फायदा, and वो मोंगा भाई को हुआ था फायदा. So what was that about? Basically, there were two teachers, and not name them. दो faculties थे. I felt that उनका जो internals देने का system था ना, मार्क्स वो बहुत different था. So it was not very clear, and जब marks final आते थे, तो it would have been very less. ठीक है? And this is something which I was little active, so I raised this issue कि sir,
I went to sir and then I told him कि sir ऐसे सिस्टम है and it is very complicated. हर एक सब्जेक्ट का सिमिलर सिस्टम होना चाहिए and it is being very complicated for us. Even the test जो समय जो टेस्ट जिस तरीके से लिए जा रहे थे एक दो सब्जेक्ट के, it was very complicated for us and टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम होता रहा था टेस्ट में. तो the few people who could ace that, but जिनको नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था, मैं उनमें से था. So then I went and I told sir कि sir ये ऐसी चीजें हैं, and then sir told me कि okay fine, we'll take notice of this. और सब कुछ हो गया, पूरा नोटिस लिया गया, सब कुछ लिया गया, बट मोंगा के साल में लिया गया. तो मोंगा के साल में सारी चीजें बदल गई और मेरे साल में मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम एन एलुमनाई हु हैज क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट्स इन लाइफ ऑफ द करंट स्टूडेंट्स. समझ रहे हो? अब मेरे साल में मैंने कंप्लेन की थी और उसके बाद लगे मोंगा के साल में सब ठीक हुआ है. मेरे सबसे ज्यादा नंबर उनकी दोनों फैकल्टीज के उसमें आए हैं. और वही और when I used to ask सार्थक, मैंने उसको बोला ऐसे लेता था ना, वो बोला नहीं नॉर्मल. मैंने बोला यार ये देखो, और एक बार तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था. मैंने सर को जाके बोला था, एचओडी उस समय तो थे, कि सर ये सर ऐसा करते हैं. तो उन्होंने वो सर को बुलाया, बोला संकल्प बोला तुम ऐसे करते हो. उन्होंने मेरा नाम ले लिया उधर. फिर उसके बाद तो वो किस्मत की बात ये है कि उसके सारे लेक्चर्स हो गए थे वो सर के और मार्क्स उन्होंने दे दिए थे, अदरवाइज तो मैं चेहरा ही नहीं दिखा पाता उनको. देखो 3 इडियट्स में एक डायलॉग है ना, वो आई थिंक वो कहते हैं कि मतलब चतुर का वो होता है 2 तरीके, टॉप करने के 2 तरीके हैं, या तो खुद सबसे अच्छी पढ़ाई कर लो या दूसरों के नंबर गिरा दो. ये संकल्प ने तीसरा तरीका निकाला है कि फैकल्टीज की जगह कंप्लेंट कर दो, फिर तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे. ये तीसरा यार जेन्युइन था यार, मैं ऐसे भी कंप्लेन नहीं करता था, आई जस्ट यूज्ड टू ब्रिंग दैट अप टू द एचओडी. एचओडी सुनते भी थे, ऐसी बात नहीं है. देखो हुआ ना काम, हो गया ना एट द एंड ऑफ द डे, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भाई, जबरदस्त. मैंने बोला भाई इनसे तो अच्छे प्रोफेसर मैंने देखे नहीं आज तक. हाँ, क्योंकि वो बदलाव आ गया उनको. बस Sankalp, the influencer. So we've got some candid answers out of Sankalp bhai, and we'll move on to Sarthak bhai. So Monga bhai, who was your crush in your class in the 4 years of engineering? So there were many, but not many, but like some, but like I think I had a crush on Hiral Modi ma'am when she taught us in the final year. अरे क्लास में थोड़ी रहती हिरल मोदी मैम. मैम she क्लास को पढ़ा रही थी ना, क्लास के अंदर थी मैम. क्लास ऐसा थोड़ी ना है. ऐसा ही है. मेरा आंसर सही था, मतलब कोई ना कोई तो होगी नताशा, देखेंगे हम लोग. हाँ नताशा भी. हिरल मोदी मैम very मतलब सही वाला. अरे वो वाला बता ना. मेरे को भी नताशा बहुत पसंद किया. नताशा बोल क्या ना. नताशा, ओह भाई मेरे को अच्छा, तू उस नताशा की बात कर रहा था. हाँ वही. ओह हाँ भाई, Natasha was very pretty. I think Natasha, if you're watching this, if you are single, let's connect. Yeah. Hello, moving on. Monga bhai, when you were heading your Satwa days, आप कॉलेज में कभी भी 4:30 to 6:30 नहीं रहते थे, is what we've heard. तो आप रहते कहाँ थे? मेरे पे एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये सेकंड ईयर में मिलता नहीं था. I think मैं कॉलेज में होता था. मैं 4:30 to 6:30 नहीं, 4:30 to 5:30, 1 घंटा. यार बंदा थोड़ा सुबह 8 घंटे क्लास में वो स्ट्रेस रिलीव करना पड़ता है. और संकल्प की तरह मैं क्लासेस अटेंड करता था, ठीक है. तो मैं क्लास पूरी सुबह अटेंड करके, बंदा 1 घंटा अ पर्सन नीड्स टू थोड़ा रिलैक्स. सो मैं थोड़ा जुहू बीच पे चला गया, थोड़ा ऐसे फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए, और मतलब बस ये थोड़ा बाहर जाके वॉक कर लिया थोड़ा, तभी तो बाद में फिर रात को 1 बजे तक काम कर पाऊंगा. तो यू नीड दैट ब्रेक, सो दैट यू गो टू जुहू बीच. एकदम खाली होता है 4:30 बजे, बस वो करो. इनफैक्ट एक बार तो डीन सर ने भी देखा था. डीन सर भाई वो तो वो चीज तो क्या ही बोल सकता है. डीन सर भी वॉक कर रहे थे, डीन सर भी स्ट्रेस रिलीव कर रहे थे. डीन सर को गाड़ी से बाय करते हुए गए थे. अरे डीन सर भी स्ट्रेस रिलीव कर रहे थे साथ में. भाई डीन सर ऐसे देखते टिक टिक, उसके बाद देखा ही नहीं मेरी तरफ. सर चोरी थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख टिक टिक. Another question we have for you, Sankalp bhai, कि आप
जुहू ये के जो गली गली से काफी वाकिफ है। कहाँ ये जाते rapid- थे आप? देखिए जुहू गली आई थिंक मतलब मेरा कहना ये है कि वॉक करने के लिए उससे जगह है ही नहीं अच्छी जुहू में। जुहू गलियों में घूमते रहो एंड बस इसलिए मैं वॉक करता था उधर एंड बहुत वॉक किया है मैंने। उसके बाद बस पर यही तू है। एक ही जगह क्यों वॉक करता था? सिर्फ एक कौन सा है वो गर्ल्स हॉस्टल के बाजू में, जो सिर्फ उधर ही क्यों वॉक होता था? मतलब वो कि सर्कल, मतलब थोड़ा और घूमना। जुहू बहुत बड़ा है, अमिताभ के बंगले पे जाओ। नहीं, अब मेरे नसीब में पवई नहीं था ना, तो फिर मैं इधर ही घूमता था। पर एक एक जगह पे क्यों, मतलब अब बहुत पवई जैसा नसीब नहीं था कि पवई पवई में इतना अच्छी वॉक करने के लिए, तो हम जू से काम चला लेते, क्या जू गली है, अब ठीक है चलो कॉलेज के पास है। मैं पवन में रहा था ना 1 साल, तो अभी वो कह रहा है कि मैं अभी थोड़ा सा घूमता था। So let's conclude our segment with words of advice. संकल्प स्टार्ट। Yeah, I think just words of advice would be just have the right balance of academics and just take out time for things which you actually like to do. Obviously, academics is the top priority. Just meet people, explore. MPSTME is a place where you can explore lot many different things. Just take the use of the opportunities. You know, the wonderful faculties who are always ready to help. So just uh, take the help of those faculties, reach out to them, reach out to different people, and explore. I think these are the best 4 years of the life. They will never come back. So please make sure that you enjoy. I think I totally resonate with what Sankalp said. That now that we look back, like it's हर कोई कहते हैं यार 4 साल कॉलेज के नहीं आते वापस, नहीं आए बहुत अच्छे होते हैं, एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। और ये आप तब रियलाइज करते हो जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है कि वो क्या टाइम था वो जो चल रहा था। और like for me after my 11 and 12, my 11 and 12 was amazing, which doesn't happen with a lot of people in engineering because they go to IIT coaching and everything. But my 11 and 12 was amazing because I was in a school, so I never really thought that my college would be as good, but it was even better. And Mukesh Patel has like so many things. Yeah? Like you can literally find your passion in this college, and that is something which is extremely important. Try out new things, find out what you resonate with, फाइंड आउट व्हाट योर पैशन इज। आपको एक्टिंग करनी है, ड्रामेटिक्स टीम में जाओ, आपको कार बनानी है, उसकी कमिटी है, आपको सोशल वर्क करना है, सोशल इम्पैक्ट है, इतनी सारी चीजें काउंसिल में ही, इतनी सारी चीजें काउंसिल के बाहर भी इतनी चीजें। एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स अंटिल यू फाइंड द वन दैट यू रियली एंजॉय डूइंग, बिकॉज इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा अपना पैशन फाइंड करने के लिए। ऑब्वियसली काफी लोग बाद में भी करते हैं, बट जब ये 4 साल है आपके पास, तो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन एंड find what you really like. And yeah, it's don't ever ignore your academics because that sort of stays with you for the rest of your life. You know that it doesn't matter after a very long time, but initially it does a little bit. I wouldn't say that academics are in, if you don't get a good CGPA, your future is bad. It's nothing like that, but it gives you a good push in the initial start. So focus on academics also, but yeah, have fun. These 4 years are so good, and you're gonna miss it always. And I like whenever me and Sankalp are in the city, we always go back to Mukesh Patel. I just been 1 year, but I've been back to Mukesh Patel at least 4 times to meet the faculty and everything, even though I was in the US. So whenever I was back, I was going to the college. So that is the bond that you should have, and just have fun, guys. These are literally the best years that you're gonna have, and learn new things, try out new things, find out who you are. Thank you for being here with us today. I hope you guys had fun too. It was absolute pleasure. Thank you so much, Riya. It was amazing, and all the very best, alumni committee. I think you guys are doing an amazing job. You guys are taking it to the next level, and I hope you guys do better than what Shivani did, which you guys already are doing. And even though in this time of pandemic, you're like, I think I keep on seeing alumni posts. So really great. Just keep up the good work. Just kill it, guys. Definitely keep up the good work. Best of luck. Thanks.